It's 11:30 p.m. You are lying on the bed and scrolling Instagram, and suddenly a reel pop up. This AI tool made me 1 lakh in just 1 month. You scrolled again. One more reel. I become financially independent at 19. Here's my secret. At first, it's feel inspiring, but after watching hundreds of this kind of video, एक क्वेश्चन तो आता है, अगर ऑनलाइन अर्न करना इतना इजी है, then why thousands of students are struggling today? Here's the truth. In reality, internet is full of opportunities, but यहाँ myths की भी कमी नहीं है, and यहाँ problem opportunity की नहीं misinformation की है. Today in this video I am going to expose some of the biggest online earning myths that are stopping students from making real progress. And trust me, and the last myth is so dangerous that it silently destroys more dream than all the other combined. So don't skip the video, let's begin. Hi everyone, this is Nancy. Welcome to Digital Journey with Nancy. If you are new to this channel, let me introduce myself. I am a student and a content creator. I have a great interest in exploring this digital world and especially about AI and its crazy tools. In this channel, I am documenting each and every step of my journey from a beginner to a digital creator. So if you also want to be the part of my journey or also want to make your own career in this digital field, then subscribe this channel. Before talking about the myths, let's understand something. Most students don't want to become rich overnight. उन्हें बस money चाहिए होता है, maybe for their financial freedom, or they are ashamed in taking money from their parent, or for some fun activities, or just as a pocket money they can spend anywhere they want. एंड इसी चीज़ का फ़ायदा बहुत लोग उठाते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे सपने दिखाना ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू कोई स्किल सिखाना. लेट्स स्टार्ट विद द बिगेस्ट मिथ्स इन 2026. AI will earn money for you, and many students genuinely believe this. बस ChatGPT सीख लो, that's it. AI का यूज़ करके prompt लिखो and you will earn in lakhs. Sounds exciting, right? But reality बहुत different है. AI is just like a Formula 1 car जो एक ऐसे बंदे को दिया है जिसे ड्राइविंग स्किल्स ही नहीं है, जिसे ड्राइविंग आती ही नहीं है. नो मैटर, यहाँ पे Formula 1 कार इज़ वेरी पावरफुल, बट इट्स यूजलेस अगर तुम्हें ड्राइविंग नहीं आती है तो, राइट? सेम विथ AI. ChatGPT can help you in writing. Canva AI can help you in designing. But none of them know that what exactly your client need, how to market your product or how to build trust. That's your job. Here's the difference. One student spend all the day collecting new AI tools and other student spend his days by learning new skills like editing or copywriting with the help of AI. Then so what do you think, who will earn first? Exactly, skill create income. AI is only to increase the speed. So instead of asking which AI tool can make money, ask yourself which valuable skill can AI teach me. Now you might be thinking, okay, maybe I need skill. But if I follow my passion, then everything will work out, right? Not exactly. Let's talk about this. Second myth is following your passion. तुमने ये एडवाइस तो सुनी होगी, फॉलो योर पैशन एंड मनी विल फॉलो यू. साउंड्स मोटिवेटिंग, राइट? बट इन रियलिटी ये इनकम्प्लीट है. इमेजिन योर पैशन इज़ टू वॉचिंग नेटफ्लिक्स. हु इज़ गोइंग टू पे यू फॉर वॉचिंग नेटफ्लिक्स? नो वन, राइट? नाउ इमेजिन अनदर पर्सन हु लव स्टोरी टेलिंग. वो बेसिक स्किल्स लाइक एडिटिंग एंड वॉइस ओवर सीख सकता है AI के हेल्प से एंड मेक हिज ओन चैनल ऑन यूट्यूब और वीडियोस अपलोड कर सकता है. एंड दिस कैन बी अ सोर्स ऑफ इनकम बिकॉज पैशन ऑफ स्टोरी टेलिंग इज सॉल्विंग अ प्रॉब्लम. इट माइट बी एजुकेटिंग पीपल और एंटरटेनिंग देम. रिमेंबर दिस, इनकम नेवर फॉलो पैशन, इनकम फॉलो वैल्यूज़. अगर तुम लोगों को कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर पा रहे हो, देन इनकम विल फॉलो यू. द नेक्स्ट मिथ इज़ दैट ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट बिलीव, एंड शायद तुम भी बिलीव करते हो, कि डिजिटल मार्केटिंग इज़ जस्ट अबाउट पोस्टिंग रील्स ऑन सोशल मीडिया.
अगर ये बात तुम भी बिलीव करते हो देन दिस नेक्स्ट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो विल चेंज योर पर्सपेक्टिव कम्प्लीटली। थर्ड मिथ इज़ डिजिटल मार्केटिंग इज़ ओनली अबाउट सोशल मीडिया। अगर तुम कहीं पे भी किसी को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात करते हुए या फिर तुम खुद किसी से बात कर रहे हो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, देन यू विल ओनली थिंक ऑफ द थिंग्स लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक और रील्स। But in reality, these things are just the visible part of digital marketing. But in reality, digital marketing is about understanding how a business grows online. And it includes so many things like content strategy, SEO, email marketing, Google Ads, copyright. अगर दो people same reel upload करते हैं, then why first person get thousands of sales and दूसरे को सिर्फ कुछ likes? The reason is because digital marketing is not about positioning. It's about helping people to take actions. And इसीलिए companies भी happily बहुत ही अच्छा amount pay करती है for a digital marketer who is skilled in it. Not just because क्योंकि उन्हें Instagram चलाना आता है और reel upload करना आता है, but because they know how to grow a business online. So far we have discussed 3 online earning myths. But the fourth one is more dangerous because almost every student has searched for it, at least one. What's the best online earning app? And that's exactly where we will continue in our next video in part 2.